guys, welcome back to my channel. This is me NABIHA, and in today's video we will be making a DIY umbrella. I hope you'll enjoy today's video and make sure you watch the video till the end because it is going to be great. It is a good source of a home decor and it will be great if you are free or you have got leisure time to spend on crafts or fun. So let's get started. So the materials you require for making it are fevicol MR, a pair of scissors, and some color sheets. So total you need 7 color sheets. Here I'm taking 2 pink, 2 yellow and 3 orange. And lastly, you require a stick. And the size of the sheet was 8 into 8 centimeters. You can take 10 into 10 centimeters or any other size you may prefer. Now we are on stage 1. Now for making the folds, you need to take a sheet. अब जब आपने शीट ले ली है तो आपको सबसे पहले इसे हाफ में फोल्ड करना है ताकि आपको एक ट्रायंगल मिल जाए. फिर इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्रीज आ गई. दोनों में से किसी भी एक साइड से फोल्ड करें और उसे सेंटर लाइन तक ले आएँ इस तरह से. जब आप इसे ओपन करेंगे देन यू विल गेट अ क्रीज. नाउ यू नीड टू फोल्ड इट एंड टर्न इट. अब आप देखेंगे कि एक क्रीज आ गई है. सो फ्रॉम द पॉइंट वेयर द क्रीज इज़ गेटिंग एंडेड, आपको उसी पॉइंट को लेना है और जहाँ से क्रीज स्टार्ट हुई थी वहाँ तक लेकर जाना है. नाउ यू नीड टू रोटेट दिस एंड देन यू विल सी कि यहाँ पे एक पॉकेट बन गई है. ये 2 फ्लैप्स हैं तो जो फर्स्ट वाला है उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है. वंस यू डू दिस यू आर डन विद द fold. Like this you need to make 6 more. Like this, as you can see, you need to get 7 like this. So now we're going to start arranging this. अब आपको ये लेना है और जिस तरह से मैं पकड़ी हूँ उसी तरह पकड़ के एक लेना है और फिर ये जो पॉकेट है इसमें इंसर्ट करना है. कंफ्यूज ना होए, स्मॉलर वाले में इंसर्ट करके जो लार्जर ट्रायंगल है उस वाली साइड से इंसर्ट करना है. ये एक छोटी सी पीक आ गई तो इसे अंदर फोल्ड कर दें और फिर दूसरा वाला इंसर्ट कर दें और फिर इस पीक के साथ भी वैसा ही करें. एंड लाइक दिस यू नीड टू मेक द पैटर्न. Once you are done pasting it, it should look like this from the inner side and like this from the outer side. Now you need to take a pencil, pen or any hole maker. Like here I'll be taking this pen and as you can see I'll insert it right at the center to get a hole. Now as you can see I have made the hole and now I'll insert the second edge. And now as you can see our DIY umbrella is ready. You can look at it from the top as well as from the inside. You can twist it a little from here so that it gets an umbrella-ish look. So I hope you enjoyed today's video, and if you do then make sure you give the video a thumbs up. Do hit a like, that's the same. Then secondly, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest updates too. Give your feedback in the comment section below. Always welcomed. Remember this, your feedbacks are always most welcome. Nextly, you can get to know about the best information provided in the video on today's topic in the description box too. You can visit the description box and get to know about the information. So, thanks for watching. Bye bye.